Jai Shri Ram. Welcome to the Tuesday evening satsang. We will begin in a few minutes. So, please sprinkle water on yourselves and all the participating devotees. Om Pavitraha Pavitro Va Sarvavasthangato Piva Yah Smaret Pundarikaksham Sabhahyabhyantarah Shuchi. Now, sip water from the palm of the right hand once with each mantra. Om Keshavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Rinse your hands. Om Rishikeshaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Now you may put on a kus ring on your माफ कीजिए, I'm back. Put a kus ring on your right ring finger. Om Pavitre Sthau Vaishnavyo Saviturva Prasavaha Utpunam. Om Chandanam Bandate Om Bodhipa Tvam Brahma Rupa Andhakara Nivaraka Imamayang Kritang Puja Grihastejo Pravardhaya Om Deepaya Namaha. Sprinkle water around yourselves. Om Prithvitvayadrita Loka Devi Tvam Vishnu Nadrita Tvam Cha Dharyamam Devi Pavitram Kuruchasanam. So we will now begin with the invocation mantras, starting with the Ved mantra. Om. 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 Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Dhyanamoolam Guror Murtihi, Pujamulam Guro Padam,
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओखधीको पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो दिया देवता मरुतो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दबधासो अपरीतास ओद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ॐ देवानां भद्रा सुमतिरिजूयतान् देवानाग्वं रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां वं सत्यम् उपसेदिमा वयं देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ॐ तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रम् अदितिं दक्षमस्त्रिधम् अर्यमणं वरुणगं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत्। ॐ तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्णयायुवम्। ॐ तमीशानन् जगतस्तस्तुषस्पतिं धियन् जिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूक्षानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पृषदश्वा मरुतः पृश्निम् आतरः शुभं यावानो विततेषु जग्मयः
अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषागमन्निह ॐ भद्रं भद्रं पश्येम आक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनुर्भिर्यशेमहि देवहितं यदायुः ॐ शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मधयारि ऋषितायुर्गन्तौः ॐ अदितिर्भ्योरदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम् ॐ ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः तोजो मयि प्राणपानौ ॐ तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रैर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यैः नाकं गृहाणः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः ॐ आयुष्यं वर्चस्य ग्वं रायस्पोषमोदपिदम् इदग्वं हिरण्यं वर्चस्व जैत्राया विशतादुमाम् ॐ द्योः शान्तिर् अंतरिक्षग्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिर् आपः शान्तिर् ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर् विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु ॐ हे हे रंभ तुमे ये हि अंबिका त्रयंबकात्मज सिद्धि बुद्धि पते त्रयक्ष लक्ष लाभ पितुः पितः नागास्य नागहारत्वं गणराजा चतुर्भुज भूषितः स्वायुधैर्दिव्यैः पाशाङ्कुश परश्वधैः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम क्रतौः इहागत्य गृहानत्वं पूजां क्रतुञ्च रक्ष मे ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अंजनीगर्भसम्भूतं कपीन्द्रं सचिवोत्तमं रामप्रियं नमस्तुभ्यं हनुमान् रक्ष सर्वदा ॐ ध्यायेत् आजानबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं कमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं कमलमिललोचनं धीरदाभं नाना अलङ्कारदीप्तं धततमरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं
शूलं वज्रं च खड्गं परशुम् अभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागपाशं च घण्टा धमरुकसहितम् अंकुशं वामभागे नाना अलंकार दीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ओम लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्त देववनितां लोकेक दीपांकुराम। ओम सीताराम पवन सुत हनुमान राधे कृष्ण की जय। Now we will have chalisas and bhajans now. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमद निवार सुमति के संगे कंचन वरण विराजत वेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ ब्रजर ध्वजा विराजे कांटे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस वदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित ईशा यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव
जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर बन जानो। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होठ न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अपना तेज समारो आपे, तीनों लोक काटते कावे। ऊँट पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान जुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है बरसेत जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवद नादा, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जा जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता तीर्थ करही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट हर मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। 64 बार पाठ कर कोई, टूटई बंदी महासुख होई। जोया पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा रिझेरा, की जय
चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान। चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान। मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम, मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम। चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान। चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान। मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम, मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम। सीता हरण किया रावण ने प्रभु जी ने बुलाए। हनुमान ने सीता जी को प्रभु संदेश सुनाए। सीता हरण किया रावण ने प्रभु जी ने बुलाए। हनुमान ने सीता जी को प्रभु संदेश सुनाए। हनुमान जी करते आए प्रभु जी के गुणगान। हनुमान जी करते आए प्रभु जी के गुणगान। मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम, मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम। चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान। चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान। मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम, मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम। लगी लक्ष्मण जी को शक्ति देख प्रभु घबराए। और सबले हनुमान जी दौला गिरने आए। लगी लक्ष्मण जी को शक्ति देख प्रभु घबराए। और सबले हनुमान जी दौला गिरने आए। कुछ बैठे लक्ष्मण जी लेकर श्री राम का नाम। कुछ बैठे लक्ष्मण जी लेकर श्री राम का नाम। मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम, मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम। चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान। चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान। मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम, मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम। देख के रावण की सेना घबराए। पलक झपक दे हनुमत ले लंका में आग लगा।
जाए। वानर सेना देख के रावण की सेना घबराए, पलक झपकते हनुमत ने लंका में आग लगाए। बोले प्रभु के साथ मिटाकर रावण का अभिमान, बोले प्रभु के साथ मिटाकर रावण का अभिमान। मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम, मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम। चीर के छाती बोले अपनी पवन पद हनुमान, चीर के छाती बोले अपनी पवन पद हनुमान। मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम, मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम। मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम। ओम सीताराम पवन सुता हनुमान, राधे कृष्ण की जय। Jai Shri Krishna. We are now going to have Gita Path, and the verse that we are going to be reading today is verse 29. I'm not going to read the third line that you see on your screen. That will be taken together with verse 30 next week. I'm only going to concentrate on the first two lines of this verse. Okay? So we're going to read Apane juvati pranam, prane panam tatha pare. Let's do that line again. Apane juvati pranam, prane panam tatha pare. The second line. Pranapana gati ruddhva, pranayama parayanah. We'll do that line again. Pranapana gati ruddhva, pranayama parayanah. Let's read the entire verse together now. Apane juvati pranam, prane panam tatha pare. Pranapana gati ruddhva, pranayama parayanah. One more time. Apane juvati pranam, prane panam tatha pare. Pranapana gati ruddhva, pranayama parayanah. Acha. Let us now look at the individual words in the verse, and then we will look at the collective meaning of what it is that Sri Krishna Bhagwan is relating to us in this verse. Firstly, the word apane, apana means incoming breath. When we breathe in, the breathing in is referred to as apane. Juhavati means sacrifice, yagya if you like. Pranam, prana is outgoing breath. So if apana is incoming breath, pranam here is the outgoing breath. Then there's prana apanam again. So prana again refers to the incoming breath and apana refers to the outgoing breath. So you'll notice that in the first part of the verse, apane juvati pranam, the word apana and prana appears. Now in the second part, prana apana appears again, and the word tatha pare means thus and others. Tatha means thus and apare means others. Then in the second line, pranapana gati. Pranapana gati means the cause of. Gati means the cause, the route that pran and apan take. So there's two words there, pran and apan, prana, apana, and gati. So actually three words eventually, prana, apana, and gati. Prana, I told you, the
outgoing breath. Apana is the incoming breath. Gati means the course that takes. Rudhva means having restraint, to restrain Rudhva. And then pranayama parayana. Pranayam refers to breath control, and parayana means to be absorbed. So if we look at all these words together, what is it that Sri Krishna Bhagwan is saying in this verse? He's saying that there are people who practice this prana and apana. In other words, they are able to make the prana, the outgoing breath, into apana, into the incoming breath, and apana into prana, and the incoming breath into outgoing breath. And thus, in the course of this prana and apana, of this changing prana to apana and changing apana to prana, in the course of that, they are able to restrain and become absorbed in pranayam, in breath control. So he's saying that constantly practicing the regulation of the prana, of the outgoing breath, and offering the oblation of prana into apana and apana into a prana, or to stop the passage, the flow of both incoming and outgoing breath, right? This is what we need to be practicing in life. We need to practice the incoming and the outgoing breath in such a way that eventually we'll be able to control our breath. So one way of attaining Supreme Being is through the control of our breath. So what is actually happening in the verses that we have been reading over the last few weeks is Krishna Bhagwan has been describing different kinds of yajna, different kinds of sacrifices that one can perform. He spoke about, in the previous verse, he spoke about tapo yajna, the yajna of austerity. In fact, before that, he spoke about dravya yajna. Dravya yajna is the yajna of wealth. This is where people give their wealth away to others for the benefit of others. So dravya literally means grain, right? So giving a gift of material wealth is one way in which people practice their yajna, they practice their sacrifice. There's tapo yajna, which is the yajna of austerity, where people actually they use their body, they make a physical sacrifice. They're using their body, they give up comforts, etc., to try and become better individuals. Then there's yoga yajna, which means spiritual practice. This is another kind of yajna that people perform. And there's swadhyaya jnana yajna, which is the yoga of self-knowledge. So there are so many different ways in which we can do yajna. Now, in this verse, he talks about the breath control as a yajna. So, see, the technique of breath control is described as a form of sacrifice. So we have what is called Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga means Ashta Anga, 8 kinds of physical yoga that is performed. Ashtanga, I can put it that way. And the fourth, Krishna Bhagwan refers to pranayam in this verse. So the fourth stage is called pranayam. And this practicing of pranayam helps to remove the body's diseases and keep the mind still. So in pranayam, if you're watching your screen, there are 3 movements. There's what we call Puraka, Rechaka, and Kumbha. So the first step is Purak, where you breathe in. So if you take your thumb and you block your right nostril and you breathe in through your left nostril, so you hold your
you block the right nostril and you breathe in through the left nostril. That's called Purak. That's the incoming breath. You are taking a breath in. Then this middle stage is called Kumbhaka, where you take the middle two fingers and you now block the left nostril. So both the nostrils are blocked and you are retaining the breath, you're holding the breath. Then you remove your thumb from the right nostril and you release the breath through that. That's called Rechak. So one round of pranayam is breathe in through the left nostril while blocking the right, then hold both the nostrils together and then release from the right nostril. This is pranayam. This is how we practice breath control. So this is what we are doing. We're making apana into prana, prana into apana, and eventually we are trying to control the breath. And generally, this act of pranayam, this breathing in, holding, and breathing out, is accompanied with the recitation of a mantra. You might recite Om. Very often we recite the Gayatri mantra. So when you place your right thumb on your right nostril and you breathe in, you recite the full Gayatri mantra. Then you hold your breath and you recite the Gayatri mantra again, and then you release your breath and you recite the Gayatri again. That's one set of pranayam. So this incoming breath, the holding and the outgoing breath is the practice of pranayam breath control. And what is the purpose of this here? Because, see, breathing is connected to the operations of the mind. You see, if I am disturbed by some kind of passion, if I am excited about something, then my breathing becomes irregular. And when the passion cools down, then the breathing becomes normal. When my breathing is irregular, when I'm overcome by some kind of passionate thing and my breathing is irregular, maybe because there's some kind of physical exertion, then it becomes very difficult to concentrate the mind. When the breathing is irregular, you cannot control the mind. So therefore, the regularity of breathing always accompanies mental concentration. So why do we need to practice this pranayam? Why do we need to have this prana turning into apana and apana turning into prana? Why do we need this breath control, this pranayam? So that we can have good mental concentration. So by controlling the breath, the mind also becomes controlled. And it is for this reason that breath control is prescribed as a healthy and helpful practice in spiritual life. So pranayam is one part of the Ashtanga Yoga. And those of you who are practicing Sandhya, who do the Yajurved Sandhya every morning, which are purificatory mantras, one of the things that is prescribed there is to do pranayam, this exercise that I just described to you. So in this verse then, Krishna Bhagwan is saying that breath control is also mentioned as a form of sacrifice. Now this word prana, we are loosely translating it as breath, but it actually means a subtle life force energy which pervades our breathing. So in the Vedic scriptures, there are 5 kinds of prana that are described. There's prana, apana, vyana, samana, and udana. So you'll remember that when we do puja, we say Om pranaya swaha, Om apanaya swaha, Om vyanaya swaha, Om samanaya swaha, Om udanaya swaha. So these are the 5 kinds of prana. And what these things do, these 5 kinds of prana, they regulate all the physiological bodily functions in us. So for example, samana is responsible for digestion. Right? And how do we control samana? We fast. So we abstain from food. So when we abstain from food, fasting becomes a spiritual technique which is considered a form of
So each one of these are talking about the prana can practice pranayam, which then means breath control. And as I said, breath control is linked to the concentration of the mind. So this is the gist of the verse that we have read this evening. अच्छा, यहाँ पर हम गीता पाठ को समाप्त करते हैं, and now we'll go on to do our Ramayana part. But let us first do the Ramayana invocation, and then we will continue. जय सुमिरत सिद्धि होय सीताराम, गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोई सीताराम, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई वाचाल सीताराम, पंगु चरहि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल सीताराम, द्रवौ सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम सीताराम, तरुण अरुण वारिज नयन, करो सुमम उरधाम सीताराम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह सीताराम, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह सीताराम, करौ कृपा मर्दन मयन, वंदो गुरुपद कंज सीताराम, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज सीताराम, जासु वचन रविकर निकर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा आरंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, आसन को प्रभु आइए, सिया सखा सहित भगवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। Ramayana part this evening is from Doha number 199, and you may follow on your screen. सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस, करिसि सुचरित पुनीत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी, रघुपति विमुख जतन कर जोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस करी राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे, भृगुटि बिलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छारी भजिय कहु काही, मन क्रम वचन छारी चतुराई, भजत कृपा करी अहर घुराई, एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा, ले उछंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे, प्रेम मगन कौशल्या,
निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। So, in the Doha, Sukh Samdoha Moha Par Gyan Gira Gotita, Dampati Parama Prema Basa Karisi Sucharita Punita. In this Doha, Tulsidas is giving us a description of who Sri Ramchandra ji is. He says Sri Ramchandra ji is Sukha Sandoha Moha Para. So Sukha Sandoha means Sri Ramchandra ji Sukh ke samuha hai. He is a huge collection of happiness. He is a huge receptacle of happiness. Sri Ramchandra ji is one who provides happiness to us. His moha para means moha rahita. Sri Ramchandra ji is not affected by moha, by illusion. You and I, who are beings on this earth, we are affected by moha. We are attached to material things. Sri Ramchandra ji is beyond all these. Jnana, Bani or Indriyo se pare hai. Sri Ramchandra ji is not affected by the Indriyas, by the senses. As a human being, I am attached and influenced by my sight, by my hearing, by my taste. All these things have control over me. Sri Ramchandra ji instead controls all these things. So he's beyond all these. And he is the son of Dashrath and Kaushalya. Yet he was ready to become a child and play that role purely and honestly. So while on the one hand, Sri Ram is being described as one who in whom total bliss resides, as one who is still seen when delusion is no more. When there's no more delusion, Sri Ramchandra still exists. Who is beyond intellect, he's beyond description, he's beyond sensory perception, right? Yet, such a person has yielded to the supreme love of the couple Dashrath and Kaushalya by becoming their child. This is the greatness of God. That God, even though he is all these things, yet for the purpose of his devotees, for the purpose of Dashrath and Kaushalya, he has become their child. Remember that there is a story that Dashrath and Kaushalya were Manu and Shatrupa in an earlier life. And in that earlier life, they had expressed the wish that they wanted Bhagwan, Lord Vishnu, to be their son. So even though Sri Ramchandra ji is all these things that we have described him as, yet he has given in to this desire of Dashrath and Kaushalya, and he has become their child. And he is prepared to play like a child. He is prepared to play that role in a very honest and pure way. Ehi vidhi Rama Jagat Pitu Mata. So in this way, Sri Ramchandra ji, uh, as the provider of the seed consciousness, right? He kept the people of Ayodhya, Kosalpura Basina Sukadata. This way, he kept the citizens of Ayodhya enthralled, right? Jina Raghunath Charana Rati Mani. तिन्ह की यह गति प्रकट भवानी. दो जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम किया, those who in Ayodhya endeared themselves to the feet of Sri Ramchandra ji, उनकी गति प्रत्यक्ष प्रकट है. They were given good treatment, right? So all of these people were
in Ayodhya were treated in this way. Ram are not inclined towards Sri Ramchandraji. Those people who turn their face away from Sri Ramchandraji, right? They, of course, will not get this devotion. Kavana Sakai Bhavana Bandhana. They will forever remain uh, entangled in this world of birth and death. They will never get any kind of freedom. Jiva charachar basakari rake so maya prabhu so bhaya bhake. चराचर जीवों को अपने वश में करने वाली माया की प्रभु से डरती है. So people will not be able to escape this uh, uh, world of mrityu, of death, because they are constantly going against or going away from Sri Ramchandraji. Ehi vidhi sisu vinod prabhu kinha. Sakal Nagar Vasi na Sukadina. And in this way, Sri Ramchandraji played these childhood games, so to speak, with the people of Ayodhya. इस प्रकार प्रभु ने बाल लीला करके सब अयोध्या वासियों को सुख दिया. कौशल्या जी कभी उन्हें दुलराती है और कभी पालने में झुलाती है. And sometimes Mother Kaushalya is showering a lot of love on him, and other times she is rocking him on the cradle. प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात दिन बीतते हुए नहीं जान पाती थी. And in this way, engrossed, absorbed in the love of Sri Ramchandra ji, Kaushalya didn't notice that nights and days were passing on and that daybreak was happening. And Kaushalya used to sing all kinds of songs to Sri Ramchandra ji. तो पुत्र के स्नेह वश माताएं उनके बाल चरित्रों का गान करती. She was singing about his childhood life, singing about his all his leelas as a child. So what we are seeing from here in this description that is being given to us by Goswami Tulsidas is that we too should learn to sing the Bal Charitra of Sri Ramchandra ji in a way in which Kaushalya is doing. And this will fill our hearts with the pure kind of love for Sri Ramchandra ji. And of course, we will then go on with our life in a very pleasurable way. So just as the people of Ayodhya and Kaushalya have been singing the Bal Charitra, the childhood leelas of Sri Ramchandra ji, we too should do that, and our hearts will be filled with love and with affection for Sri Ramchandra ji. अच्छा, यहाँ पर हम इसको अंत करते हैं. कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, आसन को प्रभु जाइए, सिया सखा सहित भगवान, सियावर रामचंद्र की जय. पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय. Hare
देवा गुरु ब्रह्मा सदा शिवा हर 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 महादेवा जय शिव ओंकारा जय जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा जय जय शिव ओंकारा सीताराम पवन सुता हनुमान राधे कृष्ण की जय। शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां हे शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां तू स्वर्ग की देवी ये संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे आ तू स्वर्ग की देवी ये संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे हम हैं अकेले हम हैं अधूरे तेरे शरण हम हमें प्यार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ
तू श्वेत वरनी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वरनी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ओम सीताराम। पवन सुत हनुमान, राधे कृष्ण की जय। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे, जो जावे पद पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, अष्टमी के धन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आस करूँ जिंदगी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कनकामी, मैं मूरख कनकामी, कृपा करो वरदान। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक भोजन, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। इस विध मिलो दयामी, इस विध मिलो दयामी, तुम हो मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु सुतहर्ता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हास बढ़ाओ, करुणा हास बढ़ाओ, शरण सदा तेरे। ओम जय विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, शरण की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम सभा सब मिलकर, निश दिन यही गाओ, स्वामी निश दिन यही गाओ। पार लगा दो
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते नारायणी नमोऽस्तु ते नारायणी नमोऽस्तु ते। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ अपराधः सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयम् इति मामत्व क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वम् एव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षत्वं परमेश्वर। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री शिव शंकर भगवान पार्वती माता की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मण जी की जय। श्री बजरंग बली महावीर स्वामी की जय। जग जगनी गौरी दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सनातन धर्म की जय। सब पितर देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम। धन्यवाद। शुभ